Please follow all the security rules. Please follow all the security rules. പരമപവിത്രമായ ജഗദ്ഗുരു സത്യാനന്ദ സരസ്വതി മഹാരാജിന്റെ സമാധി സന്നിധിയിലേക്ക് ഗവർണർ സാർ ദർശനത്തിനായി പോവുകയാണ്. അതിന് മുൻപിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ടുള്ള ഗവർണർ സാർക്ക് സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം നേടുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. सभी संत महात्माओं को और साधुओं से निवेदन है कि अपने अपने सीट पर जो आसन ग्रहण करने के बाद कृपया न उठिए ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस. और महानकൾക്കും ശിവാചാര്യർക്കും സാധകർക്കും അൻപോട് കേട്ടുകൊണ്ടേ അവരുടെ ഇടത്തിലിരുന്ന് അസ്തയാമൽ நல்லபடியா നമ്മുടെ അൻപ് ഗവർണർ സാർ സെല്ലുവോ. All the devotees and Mahatmas are kindly requested to please follow and obey the rules and regulations given to us by respected police department. ദേശീയഗാനം സെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഇടയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വരാൻ നോക്കണം.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। On his great Guru Brahmashri Nilakantha Gurupada, may I invite Swami Krishnananda Saraswati Ji Maharaj, the Mathatipati of Sri Ramadas Ashram, Mumbai, to the dais. Please, Swamiji. Secondly, I would like to invite the one and only great leader of Akhila Bharatiya Sant Samiti, the General Secretary, National General Secretary of Akhila Bharatiya Sant Samiti, Dandi Swami Jitendrananda Saraswati Ji Maharaj, to the dais. And I am also inviting the Honorable Great Sri Madhavan B. Nair from USA, from America, onto the dais. And also I am inviting Sri Rajashekaran Nair, the Chairman of the Organizing Committee of Akhila Bharatiya Sant Samiti South India Sammelan. I am submitting myself unto the feet of all the acharyas here with prayers. We have to start our function. We are blessed today to get the great personality, I would like to say ever seen in the field of political sphere. If you want, I can add one of the small list, the persons in the small list, his name, Honorable Governor Sri Arif Muhammad Khan. We are all blessed to get him here today. Sir, we invite you with great pleasure. And secondly, I'm not taking much time. We got the great personality, great acharya from the cultural capital of Bharat, that is Ayodhya. Ayodhya, he was one of the great leaders of Ram Janmabhoomi Nyas Manch, and his guru's name is Mahan Nritya Gopal Das Ji Maharaj. He is the
Honorable President of the Trust, Ram Janmabhoomi Kshetra Trust in Ayodhya, and his beloved disciple, Mahant Kamal Nayan Das Ji Maharaj. He is here to preside over the closing ceremony here. स्वामी जी, आपको प्रणाम करता हूँ. आप इधर तक आकर हमारा मंच पर आकर हमको आपका आशीर्वाद देते हैं. Secondly, thirdly, I want to मैं स्वामी जी जितेंद्रानंद जी महाराज और समिति के आदरणीय मुख्य सचिव के रूप में काम करते हैं, सेवा करते हैं, आशीर्वाद देते हुए काम करते हैं. उनका प्रेजेंस हमारे लिए इधर एक ग्रेट ब्लेसिंग है. आपने काशी से इधर तक पहुंचकर हमको गाइडेंस देते हैं, इसीलिए आपको प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूं. स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज मेरा गुरु भाई है. हमारा आश्रम में सबसे सीनियर गुरु भाई है. वो मुंबई में उनको एक बड़ा संस्था है. एक नदी के किनारे 100 एकड़ जमीन में बड़ा योजना करते हैं. वो आदिवासी लोगों के लिए करते हैं. आदिवासी हॉस्पिटल चलाते हैं. बहुत कुछ गुरु सेवा करते हुए वो उनका तपस उधर हो रहा है. स्वामी जी इधर आकर हमको मार्गदर्शन देने के लिए अभी उपविष्ट है. मैं स्वामी जी आपको प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ. കൃഷ്ണാനന്ദ സ്വാമിജി മഹാരാജ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അമേരിക്കയിലുള്ള എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രസിദ്ധനാണ് മാധവൻ ബി നായർ. അദ്ദേഹം സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി ഫൗണ്ടേഷൻ അമേരിക്ക അതിലെ മുഖ്യ ട്രസ്റ്റിയാണ്. കൂടാതെ ഫൊക്കാന എന്ന സംഘടനയുടെ, അമേരിക്കയിലെ സംഘടനയുടെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റാണ്. അതിനെല്ലാം ഉപരി അദ്ദേഹം ഇന്നിവിടെ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് ഹിന്ദു പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. ശ്രീ മാധവൻ ബി നായർ ഈസ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് വേൾഡ് പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്. The headquarters is in America. He is going to conduct a great function, great inauguration of the institution next year by November 25, 26 and 27. And I welcome the great personality, and we are blessed to have him here for the final concluding ceremony of the session. He will address you afterwards. I am inviting you. मैं स्वागत करता हूँ. और श्री राजशेखरन नायर, he is here in front of us. What you are seeing now here in a good manner, in a disciplined manner, there's a great work behind it. It is from him only. So ശ്രീ രാജശേഖരൻ നായർ വളരെ ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സമർപ്പിതമായ മനസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് എഫർട്ട് വി കുഡ് കണ്ടക്ട് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എ ഗുഡ് വേ, ഐ തിങ്ക്. സോ ഐ എം വെൽക്കമിങ് ശ്രീ രാജശേഖരൻ നായർ വിത്ത് പ്രൈസ്. I pray Dharmadevji Maharaj to come down to the dais please and bless us. Dharmadevji Maharaj is the Nirdeshak of Akhila Bharatiya Sant Samiti, and he is a great leader, great orator. You have heard his sound yesterday like a lion roaring for the Hindu society. So I am very much proud to welcome him here on dais. Pranam Maharaj ji. And finally, हमारा अशोक तिवारी जी हमारे लिए
बहुत आनंद है उनको इधर स्वागत करने के लिए। वो इधर तक आकर हमसे बात किया है। कल विश्व हिंदू परिषद, अखिल इंडिया विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय सचिव है, उन्होंने सचिव है और केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के अखिल भारतीय संत संपर्क प्रमुख भी है। सो वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम हियर इन दिस डायस, इन दिस फंक्शन, and there is a limited time to welcome all of you, but keeping all of you and making you sit in the heart of my temple, in the temple heart, welcoming all of you to listen the words of the great acharyas and also the respected honorable governor. Thank you all. Jai Siya Ram. Then keynote address, पूज्य श्री दंडी स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज। नारायण श्री हरि। सम्माननीय राज्यपाल केरल प्रदेश आरिफ मोहम्मद खान जी, मंच पर उपस्थित पूज्य संतगण और नीचे दीर्घा में बैठे हुए तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से पधारे त्रिराज्य सन्यासी समिट में भाग लेने आए पूज्य संतगण, अखिल भारतीय संत समिति के इस सम्मेलन में पधारे हुए माननीय राज्यपाल महोदय जी को हम सुनेंगे। हम सिर्फ स्वागत करने के लिए खड़े हुए। भारतीय संस्कृति के इतने गहन अध्येता हैं कि आपको आश्चर्य होगा। पीछे के दिनों काशी में, भारत की सांस्कृतिक राजधानी में, जब आपको संस्कृति संसद में आमंत्रित किया था और आपको सुनने के बाद लगा, और रात्रि में राज्यपाल निवास भी गया था। केरल पहली बार आया था और आपसे केरल के बारे में इतनी छोटी छोटी बातें, 100% एजुकेशन और यहाँ के लोगों की मानसिकता कैसी है, नारी शिक्षा का स्तर क्या है, आत्मविश्वास कैसा है और केरल देश हित में कैसा सोचता है, इतनी साफ सफाई, ये सारी बातें जब माननीय राज्यपाल महोदय जी के मुख से सुना तो मुझे लगा कि शायद ब्रांड एम्बेसडर और केरल की ब्रांडिंग, क्योंकि जो छवि है हमारे मन में, जिस तरीके से केरल में दो घटनाएं हुई, एक तो अयप्पा स्वामी के मंदिर की जो घटना थी सबरीमाला प्रकरण में, देश को, दुनिया को जो कुछ बताने का प्रयास किया गया कि केरल में नारी की इक्वलिटी नहीं है, असमानता है, जबकि इसके विपरीत मातृ प्रधान राज्य है यह सुनकर के इतनी प्रसन्नता हुई कि जिस तरीके की बातें दुनिया में परोसी जाती हैं केरल के लिए, ऐसा केरल कुछ भी नहीं है। केरल आदि भगवत पाद जगत गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि है। केरल महर्षि परशुराम की तपा स्थली है। केरल नारायण गुरु की कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि भी है। और यह केरल भगवान पद्मनाभ स्वामी के योग निद्रा के विश्राम की स्थली भी है। केरल शांत है, केरल का चित्त जो है वह निर्मल है। और इस केरल के महामहिम, चूंकि आपने महामहिम शब्द के प्रयोग को के लिए मना किया हुआ है, परंतु क्या करें, हम लोग भी आदत से मजबूर हैं। अन्य राज्यों में ये राज्यपाल के साथ
जजों के साथ ये शब्द चलते हैं, लेकिन आपकी सरलता है। आप हमारे संत समिति के त्रिराज्य सन्यासी समिट में पधारे, आपको सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, अपने निदेशक आचार्य धर्मदेव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत कमल नयन दास जी, सभी पूज्य संतों की तरफ से हम आपका इस सम्मेलन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। नारायण श्री हरि। अभी ये सम्मेलन के संपूज्य समादरणीय अध्यक्ष जी महंत कमल नयन दास जी महाराज, आप आ जाइए। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामा सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभु। सम्माननीय श्री राज्यपाल महोदय, दंडी स्वामी श्री जितेंद्रानंद जी महाराज, कार्यक्रम के आयोजक स्वामी श्री शक्ति शांतानंद जी महाराज, स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज, स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, वंदनीय समस्त दूर दूर से आए हुए महापुरुषों, बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। 3 राज्यों से इतनी संख्या में हमारे संत महात्मा पधारे और जैसा कि निर्देश किया गया, जैसा कि विचार किया गया कि हम राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए सभी एक साथ एक मत होकर के सारे भेदभाव को भुला करके हम सब प्रकार से राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। राष्ट्र के ऊपर हम कोई संकट नहीं आने देंगे। हमारे राज्यपाल महोदय भी, हम जानते हैं बहुत दिनों से राष्ट्र के लिए सब प्रकार से कार्य में लगे रहते हैं। बस इतना ही कहना है, राष्ट्र है तो हम सब हैं, हमारी आस्था है, हमारा धर्म है, हमारी मर्यादा है। राष्ट्र नहीं तो याद रखो कुछ भी नहीं। इसलिए सारे भेदभाव को भुला करके, सारे मत मतांतर को भुला करके हम सब एक मत रहें, एक साथ रहें। राष्ट्र हमारा सब प्रकार से अखंड रहेगा। जय श्री राम। Thank you, Maharaj Ji. Maharaj Ji has been always with us. Before starting Rath Yatra from Ayodhya, I cannot forget his association with the Rath Yatra Samiti. And he is with us always. Aapka blessings. Now, our Honorable Governor, Sri Muhammad Arif Khan, he will light the lamp to inaugurate this Sammelan, great Sammelan. Please. Along with that, हमारा पूज्य कृष्णानंद स्वामी जी महाराज will welcome him. ओम नमो स्रंताय सहस्रमूर्तये
सहस्रपादाक्षिशिरुर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। This is our privilege. I told you that we are blessed with the presence of Honorable Governor Sri Arif Muhammad Khan. I am inviting Sri Arif Muhammad Khan ji with great respect and reverence and to address all the Mahatmas and the Punyatmas. Jai Siya Ram. Please. नाम मुझे चाहिए। डॉक्टर अरुण ने लिखी थी। डॉक्टर अरुण वो नीचे एक पेज भी है। हाँ ये आपके श्रद्धे पूज्य श्री कमल नैनदास जी महाराज, दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य विश्व प्रसन्ना तीर्था स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज, श्री माधवन बी नायर, श्री शक्ति शांतानंदा महर्षि, Shri Rajshekharan Nair. I have referred to the names who are sitting on the dais. Otherwise, all the people who are attending this event in their own right, they deserve all our respect, admiration, and I offer my salutations, my pranams to their lotus feet. आपके सभी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम और श्रद्धा और आदर। I do not know, in fact, Hari Karta ji is sitting here. He assists me in Raj Bhavan. When he informed me that about this program, so Swamiji, I do not know how to thank you. I'm really very sincere gratitude to you, very sincere, for your kind invitation and giving me this opportunity to be in the blessed presence of so many of our spiritual personalities, आध्यात्मिक जगत से आए हुए लोग. It's a blessing for me. आपका आशीर्वाद चाहिए और आपको एक बार फिर प्रणाम. Since I have been, there is no way I can try to
give some advice to you or counsel you. No, no way. We seek your blessings, we seek your guidance, and we look towards you when we are in a moral crisis. Because it is only the capability of a person or a society or a nation. Everybody faces this crisis. To overcome successfully that crisis and choose the right path, that is the time when your help and your guidance is needed. Since this is the Sammelan of Sannyasis, Swami Jitendranand Saraswati Ji Maharaj is here from Varanasi. This function is being organized in Kerala, the birthplace of Adi Shankaracharya. So I think it would be appropriate if we try to learn the message, the essence of Indian spirituality, Bharatiya Adhyatmikta, rather Bharatiyata, the spirit of Sanatan, what it is all about. It is best to rely on to refer to an incident which happened in the life of Jagat Guru Adi Shankaracharya when he was staying in Varanasi. Early morning he went for bath. Those of you who have visited Varanasi, now Varanasi is changing. Changing not in any other sense, in the sense that the streets were very narrow. It was difficult for few people coming from both directions to cross without touching each other. So Shankaracharya ji, after morning bath, he was coming back. And he saw at the corner of that narrow street a Chandal with his 5 dogs. Many people here may not understand Chandal. Chandal is the name of a caste who performed the last rites in Varanasi. Though at some point of time, they were considered outcast, but because of their profession, many of them were very wealthy. They had money and resources. So he was standing at the end of that street. Shankar saw him and when reached near, asked him, Gachati, Gachati, Gacho, Gachati. Remove yourself from the place you are standing, because it is not possible to pass through without touching each other. Then the Chandal was from Varanasi, as Swamiji has said, the cultural capital of India. And he had that Gyan. He asked Adi Shankaracharya whether I remove my physical body or I remove my Atma. What shall I remove? Sharir hataun ke Atma hataun? And Shankar, the proponent of Advaitvad, Ahem Brahmasmi, Tattvamasi. The same Brahma dwells in me, same Brahma dwells in you. The profit of that
basic principle of Sanatan, that every human being has divine potential. Divinity is inherent. You consider yourself insignificant? No. You have the potential of being divine. The contribution of Sanatan values is that it has humanized the divinity and divinized the humanity. He fell on the feet of Chandal. He said, Brahme vaha midam sar, jagat sakala, chinmatra vistaritam, sarvam chetad vidyaya tirgunaya shesham maya, kalpitam itham yasse dirhra, nitya pare nirmale, chanda lostu dui jostu guru ritesha matnisha mam. One who has understood, one who has learned, one who has appropriated the understanding, the value, that it is the same consciousness which pervades everybody. Isha vasya yat midam sarvam yat ki jaktyam jagat. One who has developed that understanding, that person is my guru, be he a Chandal or the Duij. This is the message of Sanatana. And it was not just in the spiritual field. No, केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं. हम जैसों के लिए जो सार्वजनिक जीवन में, जिन्हें थोड़े समय के लिए सत्ता शासन, we are blessed with brief authority. क्या, what beautiful expression to the Sanatan principle. राज्यम नरेंद्र रस्य भटस्य खेटका तयोर पोहे न भटो न राजा. What is the difference between the ruler and the watchman who is standing on his door? I am sitting there as governor. The security people are standing on the door. What is the difference between them and me? You remove the title of governor and you remove the clothes which I wear. Make us wear the same clothes. Then the governor and the watchman at the gate, they are not different. They are same and one. This is the message which has been given. During the period of our fall and decline, we became victim of many things which I believe are contrary to Sanatan values. Very interesting, if I remember correctly, I think it is in Vivek Chudamani. When Adi Shankar was asked, प्रश्न पूछा गया, who is entitled to salvation, मोक्ष का अधिकारी कौन है? And Adi Shankar promptly replied, पुरुष मात्रा संबंधी भी. Anybody who has human element in him, जिसके अंदर मानवता है, उसका यह अधिकार है कि वो ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करे. कोई भेदभाव नहीं. उसका यह अधिकार है. मैं गौर करता हूं, जब आप अपनी when you study your old books, then what was the purpose of sannyas? The purpose of sannyas was to attain liberation, moksha, liberation from human condition. We'll go to forest, we'll meditate, do everything. But Sanatan has another beautiful aspect.
Dharma is not religion, dharma is duty, obligation, kartavya. With the change of times, dharma also changes. The same sannyasis, the same saints, the same sadhus, people who later came from that tradition. Just now we have been informed that Swamiji is running a big center for the welfare of the Adivasis in Maharashtra. In Maharashtra. Why? What Swamiji has got to do? If you look at the ancient times, I want to attain moksha, I will retire into forest. Now Swamiji becomes entitled to moksha by serving. मानव सेवा ही माधव सेवा है. You serve God by serving God's creation. स्वामी विवेकानंद ने तो उन्होंने तो अपने जो उन्होंने संस्था बनाई उसका रखा ही है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च. Now the moksha will not be attained while you are living in forest, by doing good to the people, through the institution of Lok Sangra, Lok Kalyan. If you do Jagat Hit, Jagat Hitaya Ramaya, Jagat Hitaya Krishnaya, Vande Veena Vinayako. It is through serving the people. And that is the reason today we see so many institutions all over India. Who are running them? Who do not own a pie, except maybe Rudrakshmala. They do not own a pie. But this country, Pandit Madan Mohan Malviya used to say it, that the donor is standing at every door. Let there be somebody who has the credibility to go and receive the donation. This is not my sentence. This is what Pandit Madan Mohan Malviya used to say. And never forget, Swami Rangnath Nanda has written 4 volumes. The title of the book is Eternal Values for a Changing Society. I am not in a position to, I don't know, but I will attempt. If you translate it into Sanskrit or Hindi or Malayalam, what it will say? परिवर्तनशील समाज के लिए सनातन सिद्धांत. That will be the translation. And in that book, Swami Rangnath Nand laments. He expresses anger and sadness. He quotes from Srimad Bhagavatam. Saraswati Gyan Khalv Yatha Sati. He says that India had this great tradition. We were the worshippers of Ma Saraswati. But during the period of our decline and fall, we closed the doors of knowledge to the masses. And he said that we might have been going to the temple of Ma Saraswati. But actually we became villains of Saraswati. I personally feel that the people who are sitting here, as I said earlier, that today the realization is there that moksha is not in the forest. Moksha is in serving the God's creation. This awakening started coming in Bengal, जिसे कहते हैं Renaissance of India, about 150 years back in Bengal. Then Maharashtra, then South. And as Swamiji said,
Kerala is a society where there is 100% education, very robust sense of equality and sense of dignity. Wherever in India it is lacking, our sannyasis can show us the path. They can guide us to become true worshippers of Ma Saraswati. India's genius is tradition of knowledge and wisdom. Gurudev Rabindranath Tagore, when he received Nobel Prize in 1926 May, the person who receives the Nobel Prize has to make a speech in reply to the honor which has been conferred on him. What beautiful sentences he has said. I wish I could call Hariji here to translate them, but I think most people will understand. He said, to tell the audience, to tell Swedish people what he represents, what his country, that is Bharat, is identified with. He said, I love India. मुझे भारत से अगाध प्रेम है. Not because I cultivate the idolatry of geography. इसलिए नहीं कि मैं भूभाग को मूर्ति का रूप देकर उसकी उपासना करना चाहता हूं, इसके लिए नहीं. Not because I had the good fortune of being born in her soil. इसके लिए भी नहीं कि मुझे मेरे अच्छे भाग कि मैं इस भूमि पे पैदा हुआ, फिर मैं क्यों प्यार करता हूं? मैं इसलिए प्यार करता हूं, आई लव इंडिया बिकॉज इंडिया हैज थ्रू tumultuous times saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. भारत उस ज्ञान की परंपरा को सुरक्षित करने में कामयाब रहा है विषमतम परिस्थितियों में. इसलिए मैं भारत से प्यार करता हूं. मेरा प्यार इस कारण से. हमारी परंपरा ज्ञान की परंपरा है, और ज्ञान भी कैसा कि हमारे ऋषियों ने कल्पना की. आज हम बात करते हैं, हमारी इच्छा है. क्यों? हम किताबों में पढ़ते हैं कि भारत विश्व गुरु था, तो अब हमें भी आज भी हमें होना चाहिए. हम किताबों में पढ़ते, वी रीड इन द बुक्स दैट इंडिया हैड दिस ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम. बट आवर ऋषिज, our munis, they have told us how you can, because this is not a title, this is not an upadhi, this is a role, bhumika, which you have to perform. And how you can attain that status? The status can be attained etad desha parshu tasya sakashad agraj anmana swam swam charitram shiksheram Prithviyam Sarvam Anava. India will be such a hub of knowledge that people belonging to different civilizations and cultures, they will come to India to learn about their own traditions, about their own culture, about their own history. भारत ज्ञान का ऐसा केंद्र होगा जहां पर विभिन्न संस्कृतियों से सभ्यताओं के लोग अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का ज्ञान हासिल करने के लिए भारत में आएंगे. इसका मतलब क्या हुआ? वी विल हैव द काइंड ऑफ गुरुज, गुरु अंधकार निरोधका, एंड दोज हु आर सिटिंग हियर, दे आर नो लेस देन गुरुज. If we expect that the darkness which we face sometimes, many times, you will help us in overcoming it, then I think it would be inappropriate. I would like to conclude with a small story
which again speaks highly, which again rather high, not the highly is not the right word, which underscores the significance of Sanatan values. The Raj Parivar, the mother, uncle, auntie of Yudhishthir, after their rule is established, Pandavas are in power after many years. The uncle, auntie, and mother, Kunti, and I think Vidur also, they decide to go for one prast and ultimately sannyas. Though the Pandav princes, the king Yudhishthir, they try to cajole them, persuade them to change their decision, but they refuse. And finally they leave the palace in bark clothes, as was the custom. After reaching some distance, Kunti looks at you, stops, the great character of Mahabharata. She stops, looks at her sons, and addresses Yudhishthir. Nirvaswa kuru shresht bhim siya dibhi saha dharmete dhyatam buddhi mansate mahdastucha. You cannot continue journeying with us. Now you go back to the capital, because your duty is to run the administration for the welfare of the people. Lok Kalyan, Lok Sangra. But while conducting the affairs of the state, your buddhi must be, your reason must be established in righteousness. Dharmete dhyatam buddhi, mansate mahdastucha. And your heart and mind, manas means both, they should be big enough to accommodate everybody. This was nothing but reflection of a Vedic dictate. Pashand, Negam, Shreni, Puga, Virat, Gunadishu, Sanrakchet, Samyam, Raja Durge Janpade Tatha, which means that as far as the conduct of public affairs is concerned, it is the duty of the ruler to provide protection to those Pashand, those who deny Vedas, Negam, those who believe and follow the Vedas, or anybody. This is, I tell you, this is the beauty of this Sanatan Sanskrit. That on the basis of faith, on the basis of belief, no one is allowed to be discriminated against. These are our eternal values, and I am sure that these deliberations here in this conference will show a way to us so that we can revive our eternal values. Loka samasta sukhino bhavantu. Jai Hind. Honorable गवर्नर का भाषण सुनकर मेरा समझ में आया कि सन्यासी सिर्फ कावी के अंदर नहीं, सफ़ेद कपड़ा के अंदर भी है। सन्यासी सिर्फ आश्रम में नहीं, वो राजभवन के अंदर भी है। ऐसा एक महान को इधर मिलना हमारे लिए बहुत सौभाग्य है। प्रणाम प्रणाम। अभी हम आपको 12 बजे के पहले छोड़ देंगे। अभी ऑनरेबल गवर्नर को एक सम्मान समर्पण करना है। उसके लिए वर्ल्ड पार्लियामेंट हिंदू का चेयरमैन आदरणीय माधव बी नायर को हम इनवाइट करते हैं।
सब लोग जानते हैं ये केरल का पैतृक है, ये आरन्मुला कन्नाडी है, लोह में बनाया हुआ है। अभी राजभवन में लगाने के लिए एक रुद्राक्ष का पौधा वो भी देने का इच्छा है। आप सबको दे देंगे, ये राजभवन में पैदा हो जाएगा। ये स्मरणा के लिए, मेमोरी के लिए आप उधर रखिएगा। अभी सी आई हैड टू वेलकम पूज्य श्री पेजवार विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामी जी उडुपी. Unfortunately, he couldn't come here because one union minister is coming to Udupi, Nirmala Sitaram, Srimati Nirmala Sitaram जी, इसीलिए उनको इधर आ नहीं सका. इसीलिए उन्होंने एक वीडियो भेज दिया है, 2 मिनट का है, आप जरा देख लीजिए. ये बड़ा महान संत है, आप सब जानते हैं. नहीं अपना नाता है, इसको मारना है, ये हमारा संस्कृति नहीं है. परंतु अभी ऐसी विकृति जगत में फैल रहा है, इसको रोकना ये सरकार का काम है. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, ये सरकार का कामना होना चाहिए. सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, सबका भला चाहना ये सरकार का काम है. अभी सरकार किसका होता है? आज पुराने काल में राजों का राज चलता रहता था, परंतु अभी प्रजाप्रभुत्व राष्ट्र में प्रजा ही राज होता है. इसलिए हमारा जो कामना है, इसको सरकार के द्वारा पाने के लिए सरकार का चुनौती में भाग लेना हमारा कर्तव्य है. और मतदान में भाग लेना सब लोगों का कर्तव्य है. जब हम मतदान से दूर होंगे, किसी का भी सरकार आ सकता है और हमारा संस्कृति वो इसका नष्ट होता है. इसलिए जब हमारा संस्कृति नष्ट होता है, समाज में किसी का भी शांति नहीं मिलेगा. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. जिस संस्कृति ऐसा कहता है, इस संस्कृति को जगत में रहने के लिए, इस संस्कृति को जिस सरकार अपनाता है, इसका चुनाना हमारा कर्तव्य है. इसलिए हम सब लोग चुनौती में और मतदान में भाग लेना है. किसी का भी सरकार आ सकता है और हमारा संस्कृति वो इसका नष्ट होता है. इसलिए जब हमारा संस्कृति नष्ट होता है, समाज में किसी का भी शांति नहीं मिलेगा. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. जिस संस्कृति ऐसा कहता है. ये स्वामी जी का संदेश था. अभी ब्रह्मश्री कृष्णानंद सरस्वती महाराज 1 मिनट में आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि हमारा ऑनरेबल गवर्नर जी को जाना है, इसीलिए प्लीज.
और एक आदमी भी है इसीलिए हमारा आ जाइए। सबको श्री चरणों में मेरा नमस्कार। मेरे लिए ट्रैवल करना नहीं, मुंह खोलना नहीं, ऐसा डॉक्टर ने हमको बताया है। मेरे लिए सौभाग्य है जब भी माननीय हमारे गवर्नर ने जब भी बात किया, मेरा आंख भर गया, क्योंकि अगर हम ये भावना हमारे मन में रखते तो वसुधा एव कुटुंबकम ये सारा विश्व को दे सकता है। वहाँ पशु पक्षी मानव सारे सितारे ये सूर्य सब हमारा है। हम जब भी पैदा हो गया है करोड़पति बन के पैदा हो गया है। अभी आपने अमेरिका में नासा में करोड़ों रुपया दो, आपका एक बाल खरीदने को नहीं मिलेगा। आप करोड़पति है, लेकिन हम कहते हैं मैं कुछ लाया नहीं है, आपके पास सब कुछ है। इसलिए बहुत प्यार से आप इसको संभालना, हमारा विश्व का गुरु बनने के लिए, हमारा देश के लिए ताकत देना, आप सब मिलते हैं तो हमारा देश हो गया। इसलिए मेरा वाणी को विराम करता हूँ। आप लोगों को देखते ही तो मेरे लिए बात करने के लिए मन बहुत लगता है, लेकिन मेरे लिए एक preventive detention order or whatever it may be. So, we will meet. Each and every gully or house, it is there your working place. Either you are in the parliament, or you are in the Rajya Sabha, or you are in the street. Where you are meeting the people, there you can start your work. So, I welcome all of you and work for our country. हमारा नारा यही है, भारत माता की जय। इसके ऊपर दुनिया में किसको नहीं है। सारा विश्व के अंदर हमारा देश का माँ का के पुकारता है, सिर्फ भारत में है। भारत माता की, जोर से भारत माता की वंदे वंदे। जय सीताराम। ആരോഗ്യത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല, हेल्थ कमी नहीं है, ऐसा दिखा रहा है। अभी നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട അതിഥിയാണ്, अमेरिका से आया हुआ है, हमारा समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं इंटरनेशनली। उनसे भी ऐसा बोलने के लिए हमको संकोच नहीं है, ऐसा एक रिलेशनशिप अनकंडीशनल लव है। इसीलिए उनका भाषण भी थोड़ी टाइम में वो कंक्लूड करने के लिए इसलिए प्रार्थना करता हूँ। ओम सब गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपताये नमः। नमस्कारम। जय सीताराम। First of all, I want to oblige, or I want to make appreciation for the extra protocol extended to me. Generally, governor is the last spoken, and thereafter the gift and say farewell. So I have conducted several governors' meetings, so I know that. So it's a surprise. I must say special thanks. I am standing here as a chairman, World Hindu Parliament. By name, it is very big, but it is very infant in the beginning. But it is a vision of 20 years back. Swami Satyananda Saraswati has envisaged and spoken. Then 2000, 2001, 2003, Swamiji has spoken about the World Hindu Parliament, World Hindu Bank.
all those things, I bow my head in front of Swami Satyananda Saraswati for the vision, for the foresightness, for the vision and mission together. Let us bow our head to Satyananda Saraswati Swami. Thank you. World Hindu Parliament, it is not a new thing, but the old wine in new bottle with a lot of vision and lot of energy, lot of initiatives, lot of dynamism, lot of communal forces have made that become vibrant. And that is the time I met Shantananda Maharshi, my beloved Guru, in an accidental way. That is the starting of formation of Satyananda Saraswati Foundation. That has created the formation, and also immediately we bought land for that particular organization too. It has gone much progress. I wanted to special thank the disciple of Satyananda Saraswati, Shantananda Maharshi, make it happen, and he is the seed and breed of that particular project. Let us give a big clap to him. I wanted to say World Hindu Parliament is based on the principle of Sanatana Dharma, which consists of 4 principles, which you all know: Dharma, Artha, Kama, Moksha. These principles encompasses everybody with a good harmony and also gives a clear vision for your life. But something has happened, all the challenges have come all the way, and even after independence, we could not get away from those challenges. And that challenges have made a thought for World Hindu Parliament. Sri Satyananda Saraswati Swamigal visioned and also mentioned, and also I have gone through his readings and his talks. I strongly believe that all the organized religions are religiously based, politically organized, and economically connected. Unfortunately, Hindu organizations does not have a structural pattern like a organized structure, like other organizations. We have reduced the political power and also the economical power, whereby our importance nationally and internationally reducing, whereby all the challenges have come. Though we have legislations, still we confront all these challenges, and that is one of the reasons 20 years back Swami Satyananda Saraswati has foresighted these things will happen, all the challenges going to happen predicted, but though he is ahead of the current happening or current generation, but we need to upload that. The concept of welfare life or welfare country, it is perfectly, dharma is connected with politics, or the religion is connected with politics. It is like that. If the breath is taken from the human body, how the body can survive? Likewise, if the religion is taken from the politics, it will not be functioning in a welfare way. That's why the three-dimensional faction, like the religion is based and economically connected and politically organized. Those things will make strengthen, and it will go strength to strength. That is what the democratic setup will work out. This has created a threat, like loss of financial control, loss of land, reduced strength to withstand violence and suppression, and loss of political power. But
this has made the Hari Foundation or Hari Project, which Swamiji has emphasized. Hari means Hindu Arsenic International Parliament. So that is the Hari Project, which gives the World Hindu Parliament, that is the legislative body. And this, how and the scope of this parliament is that all the countries, wherever the Hindu belongs, can be connected and communicated, and once in a year or at least twice in a year, we can convene in a place with the headquarters being placed in Houston, USA, and the first convention or first parliament is going to happen November 25, 26, 27 and 28, these 4 days, and where this will have an effect of at least 50 countries, Hindu delegates, Hindu parliament members come together, brainstorming it, making it happen. And also the World Hindu Parliament contemplates about the World Hindu Bank, which is also an economic power developing to empower from village to state and country. So it is this fact, the World Hindu Parliament has emerged, or it is going to take birth next year, 2023 in November. I request all the Sant, all the self-realized and semi-realized soul sons to participate that parliament. And I wanted to thank for the opportunity given to me to present this concept of World Hindu Parliament. And we will be meeting everybody near and future, and we will take these concepts and frequently asked questions to address them. And to conclude, world is a melting pot. Now, lot of things are happening, and new power and new weaknesses is emerging, and it is going to come into a new dimension, new power shifting, and etc. And let us all work together, and we have a great civilization, and the Divine Mother, Adi Parashakti, let that goddess give the power to shape the diamond what we have. Let us uphold the Sanatana Dharma and also the holy land of Bharat. Jai Hind. Thank you, Shri Madhavan B. Nair. Next, it is high time. It's a vote of thanks. I'm inviting Shri Rajashekharanji. Please don't take much time. Jai Siddharam. Om Gurubhyo Namaha. കൂടുതൽ സമയമെടുക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇന്ന് സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന പൂജ്യ ശ്രീ മഹന്ത് കമൽ നായക് ദാസ്ജി, അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സദസ്സിനെ അലങ്കരിക്കാൻ എത്തിയ ഓണറബിൾ ഗവർണർ ഓഫ് കേരള ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻജി, പൂജ്യ കൃഷ്ണാനന്ദ സരസ്വതി മഹാരാജ്, പൂജ്യ ശ്രീ ദണ്ഡിസ്വാമി ജിതേന്ദ്രാനന്ദ സരസ്വതി, ശ്രീശക്തി ശാന്താനന്ദ മഹർഷി, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ ഈ സമ്മേളനത്തെ വിജയമാക്കി തീർത്ത എല്ലാ 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും നന്ദി നന്ദി നന്ദി. ജയ് സീതാറാം. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി. ഇത് കാണാനെത്തിയ, കേൾക്കാനെത്തിയ, ആശീർവാദം വാങ്ങാനെത്തിയ എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും നന്ദി. ഇവിടെ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി പല ചടങ്ങുകളിലും പല സെഷനുകളിലും സംബന്ധിച്ച എല്ലാ പേർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നാഷണൽ ആന്തം. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा,
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।